Now, an important update to tackle the ongoing locust infestation, particularly in the states of Rajasthan, Gujarat and Madhya Pradesh. Government has procured special state-of-the-art micro sprayers from the UK. More on how this technology is helping fight the locust challenge. Centre is leaving no stone unturned to effectively deal with the locust problem faced by lakhs of farmers in many states. The problem is more severe in the states on the international border with Pakistan, including Rajasthan, Punjab and Gujarat. Stepping up efforts to control locust swarms, the government has already imported 15 sprayers from the UK-based company Micron for locust control. It has placed an order for 60 sprayers and the remaining equipment is also scheduled in due course. माइक्रोनियर कंपनी से जो मशीनें आनी थी यूके से वो 15 मशीन हमारी पहुंच चुकी है और बाकी 15 मशीनें वो नए इस महीने के लास्ट वीक तक पहुंच जाएगी और 30 मशीनें और है वो अगले महीने के फर्स्ट वीक तक पहुंचेगी. This week, a team from the Union Ministry of Agriculture and Family Welfare reached Jaisalmer. In 55 RD at Bandha village near the Jaisalmer city, the team monitored effective treatment of the locust swarm with the deployment of these important machines. Helicopter services have also been secured for another possible locust attack expected in the month of July. The problem is being tackled at the grassroots level this time. मुख्य रूप से है राजस्थान प्रभावित है. मई माह में इसका विस्तार मध्य प्रदेश तक भी आगे बढ़ गया. कुछ एक दो जिले महाराष्ट्र के भी जो मध्य प्रदेश के बॉर्डरिंग है वहाँ प्रभावित हुए. वो सब जगह नियंत्रित किया जा रहा है. यहाँ पे टिड्डी नियंत्रण पे कार्य चल रहा है. कृषि विभाग और भारत सरकार का लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारी कर्मचारी सारे यहाँ पे उपलब्ध हैं. Farmers in Rajasthan are all praised for the efforts by the centre. टिड्डियाँ बहुत भयंकर बहुत बड़े दल के रूप में आई है. इसके लिए किसानों ने बहुत बड़ा अच्छा सहयोग रहा और अधिकारियों का भी बहुत बड़ा अच्छा सहयोग रहा. जो टिड्डी आई है ये जो है टिड्डी नियंत्रण ये जल्दी हमारे यहाँ आए. इसने टिड्डी को ख़त्म किया है. यहाँ पे सूचना पर गाड़ियाँ पहुँची है. नए नए ड्रोन आए नई नई गाड़ियाँ और टिड्डी को कंट्रोल की है. Swarms of locusts are currently active in Jaisalmer, Barmer, Jodhpur, Bikaner, Sri Ganganagar, Jaipur, Nagaur and Ajmer district of Rajasthan, Panna district of Madhya Pradesh and Lalitpur district of Uttar Pradesh. Drones are being explored for effective control of locusts in inaccessible areas and on top of tall trees. Already 5 companies have started work in many areas in Rajasthan. So far, the government has said that it has taken measures to control locust swarms in 1.14 lakh hectare area in 7 states, out of which the control operation is in full swing, mainly in Rajasthan, Gujarat and Madhya Pradesh. With inputs from Pawan Singh Faujdar from Jaisalmer and OP Yadav from Delhi, News 9 Desk, DD India.